Hello, dear students. So, in this lecture, I'll be teaching you part 2 and part 3 of the same lesson. Let's march. So, let's start. We can do it. You may ask that what can one person do? I would recall a story of my childhood. A heavy fire had broken out in the forest. All the animals were running away, including Lion, the king of the forest. Suddenly, then he saw a tiny bird rushing towards the fire. He asked the bird, "What are you doing?" To the lion's surprise, the bird replied, "I am going to extinguish the fire." The lion laughed and said, "How can you do it keeping just one drop of water in your beak?" The bird was adamant and she said, "I am doing my bit." So here the part 2 starts while Kailash Satyarthi ji tells us that we can do it, हम कर सकते हैं. And when we say this, we can do it, हम कर सकते हैं, तब you may ask or people may ask कि what can one person do, है ना. ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि एक इंसान क्या कर सकता है. सो फॉर दैट क्वेश्चन आंसर ही सेज कि मुझे अपने बचपन की एक स्टोरी याद आ रही है. इन दैट स्टोरी ही सेज कि फॉरेस्ट में आग लग जाती है एंड ऑल द एनिमल्स, लायन जिसको हम बोलते हैं द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, ही वॉज ऑल्सो रनिंग बिकॉज इन द फॉरेस्ट द फायर हैज़ broke out. And so all the animals, big and small alike, all of them were running. And suddenly, so while they were running, while the lion was running, he saw कि there's a tiny little bird. वो क्या कर रही है, वो फायर से दूर भागने के बजाय फायर की तरफ भागे जा रही है. ठीक है, रशिंग टूवर्ड्स द फायर. सो ही वॉज सरप्राइज्ड कि ये भाग क्यों रहे हैं, हम सब तो भाग रहे हैं, हम फायर से, आग से बचने के लिए भाग रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, ये आग की तरफ क्यों जा रही है. सो ही आस्क्ड द बर्ड, क्या कर रही हो. सो टू द लायन सरप्राइज द बर्ड रिप्लाइड, ओके, तो बर्ड का रिप्लाई आता है उसमें कि आई एम गोइंग टू एक्सटिंग्विश द फायर, मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं फायर को बुझाने जा रही हूँ जो फॉरेस्ट में लगी हुई है. सो द लायन स्टार्टेड लाफिंग. ठीक है, एंड ही सेज टू द बर्ड कि ये आप कैसे कर सकते हो, इतने छोटे से हो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट होल्ड वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन योर बीक, है ना. वो यू कैन नॉट डू मोर, बट यू कैन जस्ट होल्ड वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन योर बीक. शी इज़ सो स्मॉल, राइट, एंड दैट इज़ वॉट शी कुड जस्ट होल्ड इन हर बीक. सो द बर्ड वॉज adamant, and adamant means rigid. Okay, the bird was rigid, the bird was firm in what she decided, and that is why she says to the lion, I am doing my bit. इसका क्या मतलब होता है, बर्ड रिप्लाई कर रही है लायन को कि even if I can just hold one drop of water in my beak, but I am going to do my bit. what does that mean कि मुझसे जितना हो सकता है, मैं एक ड्रॉप ही बीक में होल्ड कर सकती हूँ तो नो प्रॉब्लम, मैं उतना कर सकती हूँ, तो मैं वो वाटर होल्ड करूँगी एंड फायर को एक्सटिंग्विश करूँगी. So the question in the starting of the paragraph where Satyarthi mentions कि people might ask कि what can one person do. हम भी सोच सकते हैं ना that we don't have much power, or we are not strong enough. How can we do it, or how can I do it? So these are certain questions which can arise in one's mind. So therefore he says कि we shouldn't think like that. Instead, the moral of the story, which he just says कि the little bird was just holding one drop of water in her beak, but still she was doing her bit. So even we, जितना हमसे हो सकता है, even we should do what we can do. We should do our bit. Whatever we can do, we should just do it. We shouldn't think that others will do it, strong people will do it, or rich people will do it. Whatever we are capable of, we should do that. That is what he says. In the next paragraph he says, 18 years ago, millions of individuals marched across the globe and demanded a new international law for the abolition of worst form of child labor, and it has happened. We did it. Millions of individuals did it. So next again he shares one more story that 18 years ago there were millions of individuals across the globe. पूरे ग्लोब में अलग अलग कंट्री से काफ़ी लोग जुड़े थे जो मिलियंस में काउंट कर सकते थे हम उन्हें. एंड दे वर ऑल मार्चिंग, एंड दे वर मार्चिंग फॉर द अबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर. अबॉलिशन मीन्स फॉर पुटिंग एन एंड. ठीक है, फॉर पुटिंग एन एंड, for putting an end to what, putting an end to the worst form of child labor को ख़त्म करने के लिए many individuals across the globe वो march कर रहे थे. and
उस वजह से इट हैज़ हैपेंड, उनके मार्च के वजह से। इट्स नॉट दैट इन वन country itself they were marching out. Across the globe from different countries many people were marching out, and that is why उसका result क्या हुआ, the child labor was abolished. And we did it, he mentions we did it because it was not like that one person was marching, it was millions of individuals across from different countries across the globe, they were marching. So he mentions कि हमने कर दिखाया, millions of individuals did it, है ना. Next, he says, friends, we live in an age of rapid globalization. We are connected through high speed internet. We exchange our goods and services in one single global market. Thousands of flights every day connect us from one corner to another corner of the globe. But there is one serious disconnect, and there is a lack of compassion. Let us inculcate and transform these individuals' compassion into a global compassion. Let us globalize compassion. Okay. So here he says, he tells us that we live in a rapid globalization age, है ना. Globalization means it is a process. इस process से क्या होता है that many businesses or many organization it can develop, ठीक है. It can develop in a very high speed, or it can develop gradually. So we live in a time of globalization, है ना, जहाँ पे everything is connected under internet. We all are connected through high speed internet, है ना. For example, we can just with the help of internet we can talk to any of our friends who is living abroad, or any of our relatives who is abroad, not even in the same country, who is not even living in the same country. We can just have a communication with them, है ना, with the help of high speed internet. Also, he says that we exchange our goods and services in one single global market, and nowadays even we can buy and sell our goods. We can render services, or we can take services under global market, है ना. कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट देर आर मेनी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स, है ना. सो वी बाय गिफ्ट, सॉरी, वी बाय stuffs which we need from online. There are from shopping sites which are available online, so we can exchange goods and services in the global market. ऐसा नहीं है that only we can buy through Amazon. For example, if I say about Amazon, it's not like that only Indians can buy through the app Amazon. Even people living abroad, they are also using Amazon shopping app, and they can also buy things from there. So we all are connected with the help of internet. We can just exchange goods and services globally. So next also he mentions that there are thousands of flights, and we know that there are numerous flights, and it connects each and every country from one corner of the globe to the other. ऐसा नहीं है that so we can just travel anywhere in any part of the world. We could just travel with the help of a flight. हम जा सकते हैं फ्लाइट्स में से कहीं पे भी, किसी भी कंट्री में विजिट करना, you can just book a flight and you can just visit it. So he says कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक आपको जाना है वो ग्लोब में, तो you can with the help of flight you can connect that. बट ही सेज कि आपको जब सामान दूसरे देश से ख़रीदना है, या बहुत ग्लोब के दूसरे कॉर्नर से या दूसरे डायरेक्शन में आपको कोई सामान खरीदना है, यू कैन डू दैट. इवन इफ़ यू वांट टू ट्रैवल देयर, और इवन इफ़ यू वांट टू go there, that also you can do. You can connect to the world even if they are very far, even if they even if they are very far, even if they are very distant, so you can just connect, है ना. But he says कि there is one disconnect, and that is a serious disconnect. ठीक है. What is that disconnect? कि there is lack of compassion. ठीक है. Compassion means pity and concern for those who suffer. ठीक है. कंपैशन मीन्स पिटी एंड कंसर्न फॉर दोज हु सफ़र. उनके लिए जो हमें फीलिंग आती है कि वी फील पिटी फॉर इफ़ वी सी एनी बडी हु सफरिंग और एनी बडी हु इज सैड, इफ़ वी फील बैड, इफ़ वी फील फॉर देम, इफ़ वी आर कंसर्न फॉर देम, दैट फीलिंग इज़ व्हाट इज़ कंपैशन. सो ही सेज the serious disconnect between the human beings is the lack of compassion. So he says, let us inculcate compassion, means let us develop compassion, or and let these individuals compassion, जो individuals की compassion है, मतलब me, you और everyone out there, so ये individuals के compassion को let's just connect into a global compassion.
What does that mean? Ki if I am here, let I develop the feeling of compassion. Let you people develop the feeling of compassion. Let others whom we know, let others whom we don't know, from all over the universe, across the globe, सारे जो individuals है, let us just inculcate the feeling of compassion. So likewise, individual का compassion क्या हो जाएगा? Global compassion हो जाएगा. All over the world, if everyone is developing the feeling of compassion, then it will become a global compassion. And therefore, he says, let us globalize compassion. Okay. Next, he says, Mahatma Gandhi said, if we are to teach real peace in this world, we shall have to begin with the children. I humbly add, let us unite the world through the compassion of our children. ठीक है, सो ये महात्मा गांधी जी के वर्ड्स हैं दैट अगर हमें रियल पीस चाहिए इस पूरे वर्ल्ड में, इफ़ यू वांटेड टू टीच पीपल व्हाट इज़ रियल पीस इन दिस वर्ल्ड, तो हमें स्टार्ट करना चाहिए बच्चों से शुरुआत करनी चाहिए. सो ही सेज कि लेट अस यूनाइट द वर्ल्ड. ठीक है, हम सब एकजुट हो जाते हैं. वी नो डैट गांधी जी के सिद्धांत भी थे अबाउट यूनिटी एंड peace and compassion. So he says कि let the world unite and unite through compassion. And ये compassion किन के लिए होनी चाहिए? बच्चों के प्रति. हमें बच्चों के लिए we should develop the feeling of compassion. So let the world unite and develop through the compassion for our children. Next he says, I ask, whose children are they who stitch footballs yet never played with one? वेरी लवली क्वेश्चन है ना. सो ही इज़ आस्किंग कि कौन छोटे बच्चे हैं दे हु आर अंडर चाइल्ड लेबर, दे स्टिच फुटबॉल. मैं एग्जाम्पल फुटबॉल का ही दे रही हूँ बिकॉज ही हैज़ मैंशन. सो हु स्टिच फुटबॉल्स. ठीक है, फुटबॉल्स बना रहे, वो काम कर रहे छोटी सी एज में, बट कभी भी वो फुटबॉल के साथ खेले नहीं हैं. यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड दिस द फीलिंग ऑफ दैम दैट और द कंडीशन ऑफ दैम that they make footballs but never ever have played with one football. And next he asks, whose children are they who harvest cocoa yet have never tasted chocolate? है ना. So the people, the children who harvest cocoa and the chocolate which is very tasty, which we all eat, but those children who themselves harvest cocoa but never ever have tasted chocolates in their lives. So there are certain children like them. So next question is, whose children are they who are dying of Ebola? Okay, so he asked कि वो कौन से बच्चे हैं या किन के बच्चे हैं जो they are dying because of Ebola. Ebola is a disease. Okay, Ebola is a disease, and in short, if we say in Ebola, if somebody is suffering from Ebola, he might be getting severe internal bleeding, in which severe internal bleeding happens. That is kind of disease which Ebola is. Okay, so he asks, who are these children who are dying because of such a disease, such a serious disease? And then he asks, whose children are they who are kidnapped and held hostage? Okay, so next he asks कि कौन से बच्चे हैं वो, किनके whose children are they, किनके बच्चे हैं वो जो किडनैप किए जाते हैं and उनको hostage बना दिया जाता है. Hostage means someone who is taken as a prisoner. ठीक है, someone who has been kidnapped and taken as a prisoner, and then with that children you can do anything. Either you can just make them work, or either you can just put them into certain illegal things or anything. Okay, so these children are kidnapped for a reason, right? So that is why there are certain reasons, either illegal things they might be doing with those children, or they might be taken as slavery, as a prisoner, so that they could just work for those people or such peoples. So these are the certain questions कि whose children are they. ठीक है, those questions which began from here to here. So he asks, whose children are they? ठीक है, about the football he says, about the cocoa he mentions, and about the children who were dying of Ebola, and about the children who were getting kidnapped and held hostage. So he was asking, whose children are they? So he himself responds, so all these children, they are our children. ये सारे बच्चे जो हैं, सारे बच्चे, these children, all such children, they are all our children. ये सब हमारे, मेरे, आपके और हमारे बच्चे हैं. This is what Kailash Satyarthi ji says. Next he says, I remember an 8-year-old girl we rescued from intergenerational forced labor from stone quarries. When she was sitting in my car right after her rescue, she asked me, why did you not come earlier?
Her angry question still shakes me and has the power to shake the whole world. Her question is for all of us. What are we doing? What are we waiting for? How many girls will we allow to go without rescue? So, okay, so he mentions here, he shares one more story. There was an 8 year old girl, so he's rescued, he saved that girl from intergenerational forced labor. Intergenerational means uh, involving several generations. Okay, so there were children's where children's from several generations, people from several generations were working, and okay, so from stone quarries. Okay, so from stone quarries means from pits. Okay, so what they were doing was they were working um in quarries, if we can say. The I can give you an example of a mining work. Okay, when you wanted to do some mining work, you have to dug deep inside the ground, and then you have deep inside the ground you have to do the work. So such kind of work which people were making childrens to do, and that is why it is mentioned from stone quarries, from deep pit. ठीक है, बहुत गहरे गहरे गड्ढों के अंदर थे ये बच्चे, काम कर रहे थे. एंड फ्रॉम दैट प्लेस an 8-year old little girl, so when she was being rescued, and after the rescue operation, when the that little girl, 8-year-old girl child, when she was sitting in beside Kailash Satyarthi ji, she was asking Kailash ji that कि आप पहले क्यों नहीं आए, इससे पहले क्यों नहीं आए. सो दैट इज़ द क्वेश्चन शी इज़ आस्किंग. एंड ही सेज कि वो जो गुस्सा था उसके क्वेश्चन में, जब उसने पूछा कि आप पहले क्यों नहीं आए, यू कैन जस्ट इमेजिन दैट अ लिटिल गर्ल, 8-year-old girl, when she was being rescued, she is asking the person who rescued her कि आप पहले क्यों नहीं आए हो. So you can just imagine the troubles, or the kind of difficulty she was undergoing with. And that little girl dared enough to ask Kailash sir that why didn't you come early, आप पहले क्यों नहीं आए. And therefore he says कि her angry question still shakes me, it moves me. He also says कि उस angry question में it has the power to shake the whole world, है ना. That it has the power to shake the whole world. The little girl, 8-year-old girl, she was suffering so badly. And when she questions कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बचाया, so that question is not for Kailash sir itself, or not for the people who work for such rescue work. It is for each one of us. Okay, so that is why he says that the question of that little girl has the power to shake the whole world. Okay, and he also says that her question was not only for me, it is for all of us. ठीक है. And he asks, what are we doing, हम कर क्या रहे हैं, हम किसका वेट कर रहे हैं. There are many girls, how many girls we will allow to go without rescue. There are many girls, and here he has mentioned about the girls, but there are many childrens also. Okay, including boys, little children's, boys and girls. So he mentions about girls also specifically here, that how many girls को हम will we allow to go without rescue. ठीक है, even each and every second of this time where we are safe, there are millions of people, or millions of girls, or millions of children, they are in trouble. They are working, or they have been trained. सो दैट इज़ वाई ही आस्क कि कितने हम छोड़ देंगे ऐसे ही बच्चे, हम उन्हें बचा नहीं पाएंगे ऐसे. द क्वेश्चन ही मेंशंस हियर. नेक्स्ट ही सेज कि चिल्ड्रन आर क्वेश्चनिंग आर इनएक्शन एंड वाचिंग आर एक्शंस. ओके, जो बच्चे हैं जो ये सब सह रहे हैं, दे आर क्वेश्चनिंग, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं. क्यों पूछ रहे हैं? बिकॉज वी आर नॉट डूइंग एनी एक्शन. इन एक्शन मीन्स द वे वी आर बिहेविंग, नॉन एक्शन, in short, non-action. So when we are not doing any action for them or against such people who are doing these things with these little children, so हमारे inaction को देख के बच्चे questions कर रहे हैं, and they are also watching our actions. ठीक है. So even if we are doing nothing, those children watches us, and even if we are doing anything, so they are watching our actions as well. And he says next, we need collective actions with a sense of urgency.
ठीक है. It's not that somebody or one single person can do certain actions. Yes, everyone needs to do their bit, but we need collective actions. We need to take actions on a collective basis. Okay, all the world should join together and we need to do certain actions with a sense of urgency. ऐसा नहीं है that tomorrow we should do it now. He says कि with this sense of urgency कि urgent है, सबसे important work is saving a child. So that is why we all need to join, collectively take actions, and that too not we should not delay, we should just do it on an urgent basis. He says next, every single minute matters, every single child matters, every single childhood matters. So, like I said already, that every in this moment, as we are safe, there are people who are not safe. So that is why he mentions ki every single minute matters. Ki we shouldn't wait that we will see tomorrow or anything like that. That is what he explains in his lecture. He says कि every single minute is matter. हर एक बच्चा जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड एवरी सिंगल बच्चों का एवरी सिंगल चाइल्डहुड मैटर्स. ठीक है, उनका जो बचपना है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना. वंस द चाइल्डहुड इज़ गॉन, एज यू ऑल्सो नो दैट वंस यू आर ग्रोन अप, यू कैन नॉट जस्ट मूव बैक एंड लिव योर चाइल्डहुड अगेन, राइट. सो बट वी आर वेरी grateful enough that our childhood was much better than these children who suffer. They don't have any childhood, they don't know what childhood means. They never played, or they didn't got what they needed during the childhood time. So that is why he mentions कि minute also matters and every child in the world matters, and उन सारे बच्चों का जो बचपना है, every child's childhood also matters. Next, he says, therefore, I challenge the passivity and pessimism surrounding our children. I challenge this culture of silence and this culture of passivity, this culture of neutrality. Okay? So, first I'll tell you the meanings of passivity. Passivity meaning is, I told you in class, I remember this word, but anyways, I'll repeat again. Passivity is acceptance of what happens without active response. Passivity means where we do no action. I'll repeat the meaning again. Passivity means no action taken, and acceptance of what happens without active response. Okay, so whenever we accept whatever happens in our life, good or bad, and when we accept that fact and we are not responding anything to it. For example, if something bad is happening, and we see it, we know that we could stand against that bad action, but we are accepting the fact and हम कुछ response भी नहीं दे रहे हैं. So that is what passivity is. ठीक है. And pessimism. Okay, pessimism. So the qualities of passivity. So any person who is a passive, who so sorry, pessimism is believe that the worst will happen. Any person who believes that worst will happen, that is pessimism. Okay, pessimism means believing that the worst will happen. So that is pessimism. And next one was neutrality. Neutrality means not supporting either side. ठीक है, ऐसे लोग होते हैं जो ना कोई भी साइड नहीं ले रहे हैं, ना सही का साथ दे रहे हैं ना गलत का साथ दे रहे हैं. दे आर जस्ट न्यूट्रल. ठीक है, सच पीपल हु आर न्यूट्रल, सच पीपल हु डजंट सपोर्ट एनी साइड, नॉट सपोर्टिंग और हेल्पिंग आइदर साइड. ठीक है, सो दैट इज़ न्यूट्रलिटी. ठीक है, जो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं, बस न्यूट्रल है. वो सही हो रहा है तो हाँ ठीक है सही हो रहा है बोलेंगे, गलत है तो ठीक है गलत हो रहा है बोल रहेंगे, ना सही के साथ है ना गलत के साथ है, दे आर इन द मिडल. सो वो है न्यूट्रलिटी. सो वो भी गलत है. ठीक है, neutrality, having the neutrality is also very wrong. So I'll explain the last paragraph of part 2, which was therefore he says कि I challenge the passivity and pessimism. ठीक है, the people who are who have the who have these passivity and pessimism into them, that when with the people who accept जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ एक्शन नहीं कर रहे हैं, एंड दे बिलीव, पेसिमिज्म मीन्स वे दे बिलीव कि वर्स्ट हो रहा है होने दो,
ठीक है, एंड दिस नो कि बुरा होने ही वाला था, हाँ इन लोगों के साथ तो बुरा होने ही वाला है, दिस बिलीव, दिस पेसिमिज्म. सो ही challenges this passivity and pessimism of such people surrounding our children. Okay, when they think कि हाँ ये passivity and pessimism है and these children deserve such things, or for those people he challenged them. And he also says कि I challenge this culture of silence. ठीक है, जो जो शांत होते हैं, जो आवाज़ नहीं उठाते हैं, जो एक्शन नहीं लेते हैं, so that culture also he challenges. And the culture of passivity, passivity I already explained you. So, okay, so he challenges the people who are silent, he challenges the people who are who believes in passivity. So, and also the culture of neutrality. Okay, the culture of neutrality means they are not bothered of anything, not supporting anything, not the good side, not the bad side, nothing. So this all he gives challenges. So part 2 here ends. Let's continue part 3 in the same video. Part 3 is I call upon the governments, intergovernmental agencies, businesses, faith leaders, workers, teachers, and NGOs, and each one of us to put an end to all forms of violence against children. Slavery, trafficking, child marriages, child labor, sexual abuse, and illiteracy, these things have no place in any civilized society. So part 3 he starts ki now he has told the public that what we must do or what the public must do. Now he says ki now I am asking all the governments, ठीक है, all the governments of the world and intergovernmental agencies. Okay, तो governments जो भी world में जितने भी governments है सारे governments के लिए this is the message. Also he wants intergovernmental agencies means two or more government. We know that there are intergovernmental agencies are there जहाँ पे एक दो या दो से ज़्यादा governments मिलते हैं, जुड़ते हैं, and they for a certain cause, for development or for any other work, for the development usually. So there are agencies where two or more governments have joined together. सो उन्हें उनके लिए भी एक मैसेज है. बिजनेस जो चलाते हैं, जो फेथ लीडर्स हैं, फेथ लीडर्स मीन्स रिलीजियस्टिक लीडर्स जो है, वर्कर्स हो गए, टीचर्स हो गए एंड NGOs हो गए. सो सभी के सभी जो काम करते हैं फॉर द गुड कॉज और हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर और द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक, even the little children. So he calls all of us so that we could just join together and put an end to all forms of violence against children. हम सब मिलकर क्या करें, ये जो violence होता है बच्चों के against उसको ख़त्म कर दे. We should put an end. He also mentions about these the brutality which is suffered by children, which was slavery, trafficking means trade of children's, बेचा जाता है उन्हें, and child marriages, child labor, sexual abuse, and illiteracy. So these are the things which have no place in any civilized society. He mentions about these brutality of children which children suffer. So he says, mentions these things and he says कि इन सब की हमारे civilized society में कोई जगह नहीं है. Civilized means a place of social development. If we want a country to be developed, if we want the world to develop, so we should not give space to these things in the world. Okay, what are these things? This one, the brutality which I just read, slavery, trafficking, illiteracy, and all that. Okay, so next he says, friends, we can do this. Governments must make child friendly policies and invest in education and young people. Businesses must be more responsible, accountable, and open to innovative partnerships. Intergovernmental agencies must work together to accelerate action. Global civil society must rise above the business as usual and fragmented agendas. Faith leaders and institutions and all of us must stand with our children. Okay, so he tells that how we can do that. So he says, friends, government को क्या करना चाहिए, child friendly policies बनानी चाहिए. Okay, so when government makes certain policies, all the people across the country, they need to follow it strictly, otherwise it will be against the law. So that is why government को सबसे पहले child friendly policies को बनानी चाहिए. And then the governments should invest, उन्हें they should invest a lot of money in education, बच्चों की छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए एंड यंग पीपल के एजुकेशन के लिए द गवर्नमेंट्स मस्ट इन्वेस्ट इन अ लार्ज अमाउंट. बिजनेसेस क्या कर सकते हैं, दे शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल. रिस्पॉन्सिबल, यू नो, अकाउंटेबल, द मीनिंग ऑफ अकाउंटेबल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. ठीक है,
kind of very relatable to responsible, huh? Very relatable to responsible. So these business people must be responsible, and they should be very open to innovative partnerships. ठीक है, उन्हें क्या करना चाहिए, इनोवेशन करना चाहिए, पार्टनरशिप्स जो पार्टनर इनोवेटिव पार्टनरशिप्स करनी चाहिए, so that they could develop. So when businesses also grow, the income also grows, and when the income grows, the government also can enhance the investment in the education. Now what can intergovernmental agencies can do is they should work together to accelerate action. So all these people should work together to accelerate action, means to quickly do the action. Okay, so this intergovernmental agencies can do. And the global civic society, all the global civil society, जो भी वर्ल्ड में जितने भी सोसाइटीज़ है जो वर्क करती है फॉर द राइट्स ऑफ सिविल्स मीन्स पीपल, कॉमन पीपल के राइट्स के लिए, दे मस्ट राइज अबव द बिजनेस. Okay, they must rise above the business as usual and fragmented agendas. What is that? Whatever उन्हें जो भी उनका बिजनेस है एज यूजुअल, वट एवर दे रन, वट एवर बिजनेस, उन्हें उनसे ऊपर उठना चाहिए, एंड फ्रैगमेंटेड एजेंडा से भी ऊपर उठना चाहिए. मतलब फ्रैगमेंटेड मीन्स स्प्लिट अप. ओके, स्प्लिट अप एजेंडास, मतलब जो एजेंडाज हैं वो भी एक नहीं है, वो बिखरे हुए हैं. कोई एजेंडा किसी चीज़ के डेवलपमेंट की बात करता है, दूसरा एजेंडा किसी और चीज़ के डेवलपमेंट की बात करता है. तो ये सारे जो बिखरे हुए एजेंडाज हैं, एंड जो बेसिक इनका जो बिजनेस है एज़ यूजुअल जो बिजनेस करते हैं, और इनके जो फ्रेगमेंटेड एजेंडाज हैं, इन सबसे ऊपर उठ के डिसीजंस लेने चाहिए एंड वर्क करना चाहिए फॉर दीज चिल्ड्रंस. एंड फेथ लीडर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, रिलीजियस्टिक लीडर्स जो होते हैं एंड ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सभी को इस पैराग्राफ में जितने भी मेंशन किए, ऑल दीज पीपल मस्ट स्टैंड विद आवर चिल्ड्रन. सबका मोटिव, the prime motive should be the children. Okay, when the children will grow with proper education, all these people will also get its benefit. The government will grow when children get education, they would earn a living, and when they will earn, governments ko bhi fayda hoga. So likewise businesses also will develop. So likewise, only this is very important, this is very prime, this should be the prime motive of all the governments actually. And next he says, he must be bold, we must be ambitious, and we must have the will, we must keep our promises. Okay, so this is understandable, very easy कि हमें बहुत bold होना चाहिए, हमें ambition होना चाहिए, हमारी लाइफ में एक गोल होना चाहिए, एजेंडा होना चाहिए, एंड वी मस्ट हैव द विल. ठीक है, हमें चाह होनी चाहिए कि हमें क्या करना है आगे, एंड जो भी है, जो भी हमारा एम्बिशन है, जो भी हमारा एजेंडा है, जो भी हमें चाह है कि हमें क्या करना है, उसके लिए वी मस्ट कीप आवर प्रोमिसेस. ठीक है, वी मस्ट कीप आवर प्रोमिसेस एंड वी मस्ट स्टिक टू इट, एंड देन वी विल लीड टू आवर एम्बिशन. Next, he says, over 50 years ago, on the first day of my school, I met a cobbler boy, my age, sitting outside the gate of my school. I asked my teachers, why is he working outside? Why is he not with us in the school? My teachers had no answer. One day, I gathered the courage to ask the boy's father. He said, sir, I have never thought about it. We are born to work. Okay, so one more story he shares कि 50 years पहले जब first day of my school. Okay, so he wanted to go to school when it was the first day of कैलाश सर itself, when कैलाश जी का सब first दिन था स्कूल में जाने का, तब उन्होंने एक cobbler boy को देखा. The cobbler is a person who mend shoes. ठीक है, जो बच्चा है वो मेंड कर रहा है शूज़ को, चप्पल सील रहा है, शूज़ सील रहा है, दैट इज़ द वर्क ऑफ अ कॉबलर. सो उसने कॉबलर बॉय को देखा. वो बॉय भी कैलाश जी के ही एज का था. ही वॉज सिटिंग आउटसाइड द गेट एंड डू मेंडिंग द शूज़ एंड मेंडिंग द सैंडल्स आउटसाइड द स्कूल. एंड जब कैलाश जी ने इस बच्चे को देखा, कैलाश जी भी बच्चे ही थे when he was little child, that time when he saw that, he asked his teachers कि टीचर, ये बच्चा काम क्यों कर रहा है बाहर, ये हमारे साथ स्कूल के अंदर क्यों नहीं है, मैं हमारे साथ क्यों पढ़ नहीं रहा है. दिस वॉज द क्वेश्चन. सो टीचर्स के पास कोई आंसर ही नहीं था इस क्वेश्चन का. एंड वन डे, तो ये क्वेश्चन वो पूछता रहता था कि क्यों ऐसा है, कि वो बाहर क्यों काम कर रहा है, हमारे साथ अंदर क्यों नहीं है. दिस वॉज द क्वेश्चन विच वॉज ऑलवेज रनिंग थ्रू हिज माइंड. सो वन डे ही गैदर्ड द करेज, उसने हिम्मत जुटाई, एंड वो जो बच्चा है जो मेंट करता है शूज़, उसके फादर से पूछा, एंड उनके फादर का रिप्लाई था, सर, ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं, बिकॉज हम क्यों बॉर्न हुए हैं, हम
चप्पल सिलने के लिए, कॉबलर का काम करने के लिए ही बॉर्न हुए हैं. दिस वॉज द आंसर गिवन बाय दैट कॉबलर बॉयज फादर. So when he heard that answer, his answer made me angry. It still makes me angry. He says कि जब मैंने वो आंसर सुना कि मैंने तो ऐसा सोचा नहीं है, हम पैदा क्यों हुए हैं ताकि हम कॉबलर का काम कर सकें. So that response made Kailash, as the little Kailash, I would say, the child Kailash, very angry. And he says कि जब भी मैं उस बारे में सोचता हूँ तो मुझे आज भी it still makes me very angry. ठीक है. As a child, I had a vision of tomorrow, a vision of that cobbler boy sitting with me in my classroom. Now that tomorrow has become today. I am today and you are today. Today it is time for every child to have a right to life, right to freedom, right to health, right to education, right to safety, right to dignity, right to equality, and right to peace. ठीक है. वेरी ब्यूटिफुल एंडिंग योर. सो ही सेज कि नाउ वो कैलाश सर, द लिटिल कैलाश वॉज हिमसेल्फ अ चाइल्ड, है ना, वो खुद भी बच्चे थे. बट वो सोच रहे थे, एक विजन था उनका कि कल क्या होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से यू कि इफ़ आई यूज़ दैट कि आई हैड अ विजन ऑफ टमोरो, मीन्स मैं सोच रही हूँ कि कल क्या होने वाला है, वो मेरे आंखों के सामने ऐसे चल रहा है कि हाँ कल मैं ऐसा पढ़ाऊँगी या फिर कल मैं ये क्वेश्चंस कंप्लीट करूँगी. whatever is it, a vision of tomorrow means when you're thinking and when you have a certain image uh, what you're going to do tomorrow or what will happen tomorrow. So that vision he Kailash ji had when he was a child. And what was his vision? that वो जो cobbler boy है वो कल मेरे साथ मेरे classroom में बैठा होगा. ठीक है. This was the vision he was seeing. And वो जो he was visioning about tomorrow. So वो दिन जा चुका था. नाउ टुमारो हैज़ बिकम टुडे. वो कल का जो दिन है वो आज हो चुका था. द डे वॉज पास्ट. एंड ही सेज कि आई एम टुडे, मैं आज हूँ, आप भी आज में ही हो. एंड टुडे इट इज़ द टाइम. आज ही है वो टाइम जहाँ पे एवरी चाइल्ड मस्ट हैव द राइट्स, दीज राइट्स विच ही टॉक्ड अबाउट, कि सारे बच्चों को राइट टू लाइफ होना चाहिए, राइट टू फ्रीडम होना चाहिए, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन. ठीक है. राइट टू सेफ्टी, वो सेफ़ रहे, इस चीज़ का भी उन्हें हक है. उनको एजुकेशन मिले, इस चीज़ का भी उनको हक है. उन्हें प्रॉपर हेल्थ मिले, इस चीज़ का भी उन्हें हक है. उन्हें फ्रीडम मिले, उन्हें आज़ादी मिले, इस चीज़ का भी बच्चों को हक है. राइट टू डिग्निटी, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी उनका हक है. राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू पीस. ठीक है. हर बच्चा इक्वल है. उस चीज़ राइट टू इक्वालिटी भी चाहिए बच्चों में को देनी चाहिए. एंड राइट टू पीस ऑल्सो. ऑल दीज बेसिक राइट्स मस्ट बी गिवन टू चिल्ड्रंस ऑलवेज एंड एवरी टाइम. Next, today, beyond the darkness, I see the smiling faces of our children in the blinking stars. Today, in every wave of every ocean, I see my children are playing and dancing. Okay, so today, in every plant and every tree and mountain, I see our children growing freely with dignity. ओके. सो ही सेज कि टुडे, आज, बियॉन्ड द डार्कनेस, डार्कनेस के पीछे, डार्कनेस के आगे, सॉरी, डार्कनेस के आगे मैं क्या देखता हूँ, मेरे जो बच्चे हैं, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी स्माइलिंग फेसेस मेरे सामने आती है इन द ब्लिंकिंग स्टार्स. सो व्हेन ही सीज द ब्लिंकिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई, he can see, he can feel the smiling of the faces of little children. ठीक है. एंड विथ एवरी वेव ऑफ एवरी ओशन. ठीक है. वो ही अज्यूम्स कि जो ओशन में वेव्स आती है और हर एक वेव में वो क्या देखते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, वो डांस कर रहे हैं. एंड जो भी वो प्लांट में देखते हैं या ट्री को देखते हैं या माउंटेन को देखते हैं तो वो अपने बच्चों को देख रहे हैं. तो वो उनको उस चीज़ में, प्लांट, ट्री एंड माउंटेन, उस चीज़ में भी उन्हें दिखता है कि उनके बच्चे फ्रीली विथ डिग्निटी ग्रो कर रहे हैं. Okay, this is what he sees. Next, last page. Friends, I want you to see and feel this today inside you. So he asks all of the public, all of us, that he wanted to see, he wanted us to see and feel this today. ठीक है. ये जो आज के बारे में उन्होंने यहाँ पे mention किया है, that today is the day and this is the time where we should work for that every child must receive certain rights. So he wants us to feel the today inside us.
ठीक है, आज को फील करने के लिए कैलाश सर जी रिक्वेस्ट अस, एंड देन ही सेज, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, एज आई सेड, many interesting things are happening today. May I please request you to put your hand close to your heart, close your eyes, and feel the child inside you. I am sure you can. Now listen to that child. Listen please. So next he says कि as I said, आज उन्होंने काफ़ी स्टोरी शेयर की, मतलब वो एक ही लेक्चर में उन्होंने पूरी स्टोरी बताई थी. फॉर मी आई टुक 2 videos. So he says कि so when he says कि I had shared many interesting things, and जो आजकल हो रहा है वो शेयर किया है आप लोगों से. Now he request कि आप you just take your hand and keep it very close to your heart, एंड जस्ट क्लोज योर आइज एंड फील. आप फील करो कि आपके अंदर का जो बच्चा है या आपके अंदर की जो बचपना है उसे आप फील करो. ही इज़ रिक्वेस्टिंग all of the public to do that. And then he says ki when you do that, after hearing such a great inspirational message from Kailash sir, so everyone so he says ki I know when you will listen to that, you should listen to that child and you should please listen. So he requests them again and again ki please close your eyes and feel the child which is there inside you. So when we can feel the child inside us, we would understand what are the requirements of child. You got my point? So here he tells them to feel the child inside them. So as a child, if we feel कि हाँ हम बच्चे हैं, तो we will understand कि हाँ हम बच्चे हैं तो हमें ये सब चाहिए, हमारे ये rights हैं. So we will, personalize those problems and we will understand those children's problems personally. Okay. So next he says, today I see thousands of Mahatma Gandhis, Nelson Mandelas, and Martin Luther Kings calling on us. Okay, so these are great personalities. Mahatma Gandhi's के बारे में हमें पता है, Nelson Mandela and Martin Luther Kings. Okay, so all these people did great deeds for the country, and so that is why he says कि I see thousands of these people. वो थाउजेंड्स ऑफ महात्मा गांधी देखते हैं, थाउजेंड्स ऑफ नेल्सन मंडेला देखते हैं, थाउजेंड ऑफ मार्टिन लूथर किंग देख सकते हैं अपने आंखों के सामने. मतलब हम जो लोग हैं जो चेंज करते हैं, जो फीलिंग ऑफ कंपैशन रखते हैं, दोज हु फील फॉर द चिल्ड्रन एंड दोज हु वर्क और दोज हु स्टैंड फॉर द चिल्ड्रन, in them he sees such great personalities. So next he says, let us democratize knowledge, let us universalize justice, together let us globalize compassion. Okay, this is what he says कि हमें क्या करना चाहिए. Let us democratize means make the knowledge democratic. Let us universalize justice. Justice को क्या है, universally मिलनी चाहिए. Not that in one place children are getting justice, not and in the other place children are still suffering. No, the justice should be universalized all over the universe. It should be spread, and together all over the world, let us globalize compassion, which he was talking about from the very beginning. That let us globalize compassion. Next, he says, I call upon you in this room and all across the world. I call for a march from exploitation to education. I call for a march from poverty to shared prosperity, a march from slavery to liberty, and a march from violence to peace. ठीक है. सो ही सेज यार कि नाउ आज जो भी इस रूम में हैं या ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो भी लोग हैं, वो चाहते हैं कि सभी अभी मार्च करें. एंड मार्च किस चीज़ के लिए होना चाहिए? एक्सप्लॉयटेशन से एजुकेशन तक. मतलब जहाँ पे भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन मीन्स वे पीपल टेक अनडू एडवांटेज ऑफ एनीथिंग. ठीक है, एक्सप्लॉयट करते हैं, एडवांटेज ले रहे हैं, फ़ायदा उठाते हैं दूसरों का. तो वो चीज़ एक्सप्लॉयटेशन से चेंज हो जाए एंड एजुकेशन की तरफ मार्च करें. एंड जो पुअर्टी है, पुअर्टी से चेंज होके प्रॉस्पेरिटी के लिए लोगों को मार्च करनी चाहिए. द मार्च फ्रॉम स्लेवरी, जो गुलामी में जी रहे हैं बच्चे, वहाँ से उनको क्या करना चाहिए? आज़ादी के लिए मार्च करना चाहिए. एंड अ मार्च फ्रॉम वॉयलेंस, जहाँ पे वॉयलेंस कर रहे हैं लोग, वहाँ से उन्हें पीस की तरफ मार्च करना चाहिए. सो दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट्स अस टू मार्च across the globe. And next he says, in the end, let us march from ignorance to awakening, let us march from darkness to light, let us march from mortality to divinity. Okay, so here he says कि हम ignore करते हैं. We always ignore certain things when we see things which are bad. We ignore, and things we think we can't do anything about
about the same, we ignore certain things. तो हम बच्चों को तकलीफ में भी देखते हैं। काफ़ी बार ऐसा हुआ होगा कि आपने देखा होगा, पीपल द लिटिल चिल्ड्रंस आर बेगिंग, है ना? सो इवन सो समटाइम्स मैनी यू माइट हैव नोटिस, आइदर नॉट यू बट यू माइट हैव नोटिस दैट पीपल अराउंड यू, दे इग्नोर एज इफ कोई खड़ा ही नहीं है, नो बडी इज बेगिंग ओनली, दे इग्नोर द इवन द एग्जिस्टेंस एज अ इनविजिबल है ना? बुरी तरह इग्नोर करते हैं। सो ही सेज कि लेट अस मार्च नाउ फ्रॉम इग्नोरेंस, हम जो इग्नोर करते हैं, टू अवेकनिंग, लेट अस अवेकन आवरसेल्फ एंड लेट अस मूव टुवर्ड्स देम, हम जागे एंड हम उनकी तरफ जाएं। एंड लेट अस मार्च, अंधेरे से लाइट की तरफ जाएं, मतलब द वे वी लिव in the darkness, the way we think in the darkness, we should just move towards the light, and mortality से divinity की तरफ जाएं. Okay, mortality means death से लेके divinity, holiness की तरफ जाएं. And in the end he says, let us march. Okay, so this was the acceptance speech by Kailas Satyarthi ji when he was receiving the Nobel Prize award. He gave that by standing on a podium. Okay, so you understood, I hope you understood why the chapter's name is Let's March, है ना? So there were a lot of time when he says let's march together, and the purpose of let's march, okay, and what we have to do while we march. So a very great chapter. I hope you understood. Even if you don't understand any word or any paragraph or any line, make a note of it and ask me whenever possible. Okay, thank you children for listening. Take care of yourself. Bye bye.